Good evening. I hope I'm pretty much audible as well as visible. Okay, cool guys. So just let me know if I'm audible as well as visible to you guys. Cool. So I hope you guys are doing well and people have started joining in. Right. So I welcome you all again in our today's discussion. As always, we are into our SQL series today. So in over the weekends, and we are solving the premium questions, right? So we are doing the premium series questions available on uh, our thing on Leetcode. So we are doing the premium level questions on the SQL practice series, right? So we have solved some quite good amount of questions already, and again today's agenda will still be to solve those Leetcode available premium questions with us, right? And again, why these questions are important, as I've already explained, these are very standard problems, guys, very standard problems for any competitive programming involving SQL or any interviews which is expecting you to go through a SQL round, right? You can definitely expect questions from similar to these type of questions available in the practice series, right? So very standard problems. So definitely, so this is the reason why we are focusing on the premium questions as well on SQL. So please sit tight. So we'll be doing the premium questions again in this session as well. So again, guys, I welcome you all in our today's discussion. Please, as always, I'm monitoring my chat. So if you have anything to talk about, any questions, any concerns, do put up your things in the chat. I'll try to take that to the best of my knowledge. Right. But before starting, as always, quick round of introduction. My name is Arpit Jain, and I'm a senior data scientist myself. I have been in industry for almost 9 years now, into multiple domains: finance, manufacturing, automobile, telecommunication. Along with this, I'm also a motivational speaker. So I take industry sessions. I talk to students regarding job career. So do put up your question regarding your job if you have any, and also regarding data science if it is in particular. So we will talk. Subjects: Python, SQL, data science. That's what our target is. Python we are already doing over the weekdays, solving the lead code problems again. SQL we are doing the premium questions. Data science we have finished a couple of things, right? But again, let's see how we can take it forward. But again, as always, quick promotion time, guys. So you have the code in your screen, Python 10. With this, you're going to get a free bonus Relevel sample test paper. So what it is, guys? So many a times candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. It could be because of poor networking, or they do not have a better degree, like not having a degree from a tier A universities. Also, the resumes you are applying, it's not really standing out from 100 other applicants, maybe because some keywords are missing in your resume or something which is totally beyond your control. Also, you're applying to a number of jobs but still not getting even a single interview call for your job purpose. So, very practical problem. And to cater these only, Relevel has been introduced by Unacademy, which is actually India's first test hiring platform by Unacademy, helping you to get your dream job, right? So how does it help, guys? It's basically you are purely dependent on, your skills and talent here, not on any sort of degree or people networking, right? So if you're skilled enough, knowledgeable enough, you should be getting your job. So how does it work? So it's more of an assessment platform where you will be asked to go through an assessment, more like a examination kind of a thing, right? So and for the tech stack which you are interested in, right? And the only expectation from you here would be to get the best score out of this test, right? So if you're able to get the good score, that's the only expectation from you, right? So that's how simple it is. And these, once you have given the test, right, so based once the scores are revealed, it will be shared with the internal tie-up companies, and eventually they'll be contacting you depending on your score, right? Certain other benefits also, like at least 50 plus companies, including the top startups and the unicorns, they hire directly from the Relevel platform, including ENY, Upgrad, Cred, Razorpay, Urban Company, and many more. So at least 1,000 plus open job positions, that across three different portfolios: business development, front end, and the back end development. Multiple sub roles also available within these. This is completely online, guys. You can take it from the comfort of your home without stepping out, without being physically present anywhere to be part of this test. Also, this is completely free, so you can take it for no cost without paying even a single penny. So the only expectation here is to finish the entire test in a single day's time. Okay, so that's the only expectation here, and that day could be of your choice. Post the test, the scores will be revealed in a week's time, and it's an assessment anyway, so there is a qualifying score as well. So you have to get at least 70% of marks to make your Relevel profile.
But in any unfortunate situation, if you're unable to get the score, you can always reattempt it within 30 days. So I mean, after 30 days of your first attempt, right? So that's something which is you can take care of. Also, contrary, if you are one of the top scorers, you can always be awarded with some exciting goodies like MacBook, iPhone, and all that, right? So that's the thing. So with this Relevel, guys, you are in a unique position to invite interest from companies instead of you hunting for your own opportunities. It's more like once you have given the test, sit back and relax. The companies will start reaching out to you, right? The registration on this platform is also quite easy. You can just go through the website, so you can get the link, and then the things would be to choose a test. So there are three options: business, front end, and the back end development test. Multiple sub roles. You can see that. So depending on your stack skill, you can choose the test. The next would be to fill up the date. So you can choose the date based on your best availability. The last would be to fill up your demographics like full name, email ID, birth year, state, along with your gender. And the last, you have an option of a promo code. So in this promo code, you can always write the code Python 10. So if you're going to use the code Python 10 here, you're going to get a bonus sample free Relevel test paper, right? So here again, if you have used the code Python 10 in the right place, guys, that's how the practice tab should look like. You can see the option of a download paper, so you can download the sample paper and just be ready with the a replica set of questions which you can expect from the real examination, right? So that's how it works. Cool. So guys, do register for the Relevel platform today. It's quite simple and definitely worth trying. So if you're looking for a job anyway, you can always try it for once, and then maybe if you're not able to get the best out of it, you can always take your decisions elsewhere later. But at least try it for once if you're looking out for a job anyway. Cool. So we have an official Telegram channel as well. So you can always go through this channel and be part of this. So you can always, be prepared with the upcoming schedules and classes. So you need to know you won't be going around here and there for upcoming schedules. So it's the one place stop for all of the queries. So guys, do like and share the video. That's the least I can expect from you. So if you feel that you're getting benefited, so please do like and share the video. It's the least I can expect from you. So with this, we are into the premium question series, content slides. So I'll be moving to Leetcode. I'll take a few things. So Shruti says, I'm currently in second year. Should I want to learn DSA to be ML engineer or AI? I have started learning DSA, but just want to confirm that I am in the right path. Yes, absolutely, absolutely. So, yeah, it's one of the I would say important key skill sets. So definitely, it's going to be helpful for you. Even I wouldn't say I will not say it's going to be directly impacting your things, but yes, it's going to be the core of a lot of other concepts. So yes, you are in the right path. You can obviously start with this, and then you can also, if you have the leverage of time, I'm not sure what is the course content you're going through and which part of stream you are. So definitely, if you want to be in a data science stream, right? So certain mandatory skills, stats and ML, that's going to be your mandatory skills. So do focus on after DSA. Once you have covered the few concepts, then you move towards advanced stats, then machine learning, and then definitely Python is anyway the crux of everything, right? So Python SQL is going to be important anyway. So that should be your path. Cool. So let's quickly start, guys. So let me just pull up the things. Let me pull up the Leetcode website. Just a minute. Uh, I'm not sure if my screen is visible for the Leetcode. I'm just putting this up. Somehow that is not able to log in. Okay, anyway, let me just pull up that. Yeah, I hope my screen is visible, guys. You can find me on LinkedIn, no problem. Divya will I'll check that. Okay. Cool. Great. So let me just pull up the questions. So we are into the problem sets of databases. Let me just figure it out with what all questions we have solved. So on database, right? So we are into the database problems. Cool. So we have solved some quite good amount of questions, guys. So feel proud about yourself. So we have done some really good amount of questions. Okay, so I think these are the sets. We can just solve them today.
and yeah, we can take them as well. So cool. Let's quickly start without wasting time. So let's start with this question, right? So we have the question in front of us, still opening though. So let's see what this says. Cool. So we have the question, shortest distance in a line. Okay, interesting. So here we have x. I think okay. So we have the plane thing. So we did the question shorter distance in plane, right? Yesterday. So we have the 2D plane and then x and y and x2 and y2 and all that. So we did that, right? So we'll do that here as well. Similar question, but I think in the same as in the line, we'll do that. What is? So we have inputs, and then we're gonna have outputs, and we'll have constraints. Then we'll have flow. Okay, cool. So I have the table point. So that's gonna be my table point, right? And I have schema. So I have the column name and type. So that's gonna be my x. That's basically my column name. So x is the primary key anyway. So each row of this table indicates a position of a point on the x-axis. So position of a point on the x-axis. Cool, pretty simple. So write a SQL query to report the shortest distance between any 2 points. So yeah, so shortest distance between any 2 points. Shortest distance between any 2 points. Cool. So the query result format is in the following example. So we have in that like this. So -1, 0, 2. Right. So shortest distance is between points -1 and 0, which is -1. Absolute of -1 and -1 minus 0 is 1, right? So cool. So 0, 1 or 0, 2. So cool. So cool. So we have to find the shortest distance. Fair enough. Simple है. Simple minus ही तो करना है और तो कुछ नहीं करना है ना क्या कर सकते हैं but again, so same logic. So I think the same part, same thing which we did yesterday in our question. So definitely we are referring the same point twice, right? So we have to definitely call it. We have to call it twice. So that's the bare requirement. So that's what we will be doing it. Flow and all, that's fine. So let's simply start coding it. It's a very simple question anyway. So what we have? So we have select. Select, and then we have from, and then we have where, and then we have all that. So I don't think we need group by having and all that. So I'm not gonna write it. So because I believe this should be pretty much clear by now. So we anyway don't need a group by and all in this. It's a very straightforward, simple question. So select क्या करना है मेरे को? I need the shortest one, right? So that's gonna be the shortest calculation will come here. So that's what I'm gonna find, and this has to be renamed to shortest, right? So this is important. So I need to rename it to shortest. From what? So from is important. So from we need this table point to be referred twice. So yeah, so this table point to be referred twice. So I'm going to do P1 and point P2. Okay, so I've just called this same table twice. So no need to specifically join this here. And then what we have where. So where does it mean? So definitely if I'm going to join this, so this x should not be equal to my the x on the other side, right? So basically we can, in this case we can say that p1.x should not be, sorry, p1.x should not be equal to p2.x. Cool, simple. So that's going to be my where condition, because this is how I'll be taking these things together. So I have p1 and p2 given to us. So what is a, so now these parts are filled up, pretty simple. So I only have to find out the shortest calculations, and what is that? That's gonna be my so somewhere it is written, right? So yeah, so this is the actual calculation. So this is the calculation we have. So absolute of my point differences and the minimum of it, obviously, right? So what we want here, that's gonna be, so this calculation will become, so I have two tables, p1 and p2. So p1 dot x, p1 is p capital, so p1 dot x minus p2 dot x, and that's gonna be here in this case absolute of it, right? And definitely we need the minimum of all this, right? So min, so that is sorry, my bad. Okay, so this is the calculation I have for my shortest distance, right? So I have
p1 dot x minus p2 dot x, absolute of it, and then a minimum of the entire value. Cool, fair enough. So I have this information. So this is content. So like I have my this information mentioned as shortest from p1 p2 where x is not equal to p1 dot x is not equal to p2 dot x. Simple. Cool. Anybody has any concern in the logic here? Please guys quickly let me know if anybody has any concern. So this is a simple question, very simple question. Let's run this code. This should be done. Yeah, it is done. So let's try to submit this. This is pretty simple. Nothing fancy in this question. Cool. This is simple, guys, right? So just a quick thumbs up if you're able to get this logic. Cool, guys. I hope the logic is pretty much clear, right? So cool, fair enough. So I believe this is pretty much fine. Let's proceed to the next question anyway. Meanwhile, if anybody has any concerns, they will always come back to us. We'll take it. Let's jump to the next question. This is done. So the point question is also done. Cool. So I have this question now. Search second degree follower. Cool. So I have this question, second degree follower 1. Let's try to, yeah, Nayar, thank you for tapping in that. Yes, I think I did saw that. I did see that you visited my profile. Yeah. So yeah, I output and then we have constraint and then constraint and then I have flow. Cool. Great. So what I have, so in this case I have my table follow. So I have my table follow in this case, right? And I have followee and the follower. Okay, so these are my information available here. So followee and follower is the primary key. Okay, so now guys quickly tell me, बहुत समझाया मैंने कल आपको, ये क्या है? So I understand this is a primary key, but this is also called as what? Quickly guys, this is also called as what exactly? I hope this is clear, right? Guys, quickly. We have seen this yesterday. This is also called as my super key, or also called as composite key. Composite key. क्या लिख रहा हूँ? शायद स्पेलिंग सही लिखा है मैंने. हाँ, ठीक है. चलो. Anyway, let's proceed. Each row of this table indicates that user follower follow. Each row of this table indicates that the user follower follows the user followee on a social network. मैं confused हो गया. Each row of this table indicates that the user follower, okay, follows the user followee on the social network. Okay, follower follows the user followee. यार हाँ, ये तो सिंपल है ना, मतलब फॉलोवर ही तो फॉलो करेगा, यही तो मतलब है इसका, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करा इसने? ईच ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द यूजर फॉलोवर फॉलोज द यूजर फॉलोई ऑन द सोशल नेटवर्क. हाँ ठीक है. Okay, there will not be a user following themselves. I mean, yeah, obviously this is true. So there will not be a user following themselves, right? Okay, चलो ठीक है, आगे देखते हैं. A second degree follower is a user who follows at least one user and is followed by at least one user. Okay, ये interesting information है. So मेरे पास क्या है? So I have something called as my bad, a second degree follower. जो it follows at least one user, right? It follows at least one user and is followed by at least one user. So दोनों ही केस में इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? Cool है. So write a SQL query to report the second degree users and number of their followers. Okay, so output में क्या चाहिए? Second degree users चाहिए, है ना? So I need in the to report the second degree users. So this is what I need as one of the columns as a second degree users,
and the number of their followers. I want the number of their followers. ठीक है, सिंपल है. निकालते हैं क्या करना है इसमें. ये तो क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है. रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय फॉलोअर. ओके, रिटर्न ऑर्डर बाय फॉलोअर. ऑर्डर्ड बाय फॉलो. ओके, सो मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है. ओके, ठीक है. सो कांस्टेंट क्या है मेरा? ऑर्डर बाय फॉलोअर इन अल्फाबेट ऑर्डर. बेसिकली इसको अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें. ठीक है, कूल है. चलो अब एक बार क्वेश्चन का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं. सो आई हैव दिस फॉलो टेबल. सो फॉलोई एंड द फॉलोवर. सो एलिस follower, no, okay, followee and follower. So follower, okay, so Bob is following Alice. Okay, Sina is following Bob, Donald is following Bob, and Edward is following Donald. Okay, so in this case, follower, I have Bob. So Bob is a second degree follower because he also follows someone, and someone like Sina and Donald, they also follow Bob, right? Yes. So he becomes a second level follower because he follows someone and someone also follows him, right? So that's why. And here the number of followers for Bob are two, like Sina and Donald, right? Cool. And for Donald also the same. So Donald follows Bob, and Donald is also followed by Edward, right? So this is where the thing we have to look out for. So this is the explanation was given. So user Bob has two followers, right? So user Bob has two followers. This, and Bob is a second degree follower because he follows Alice, and Bob is a second degree follower because he follows Alice. So so we include him in this result table, correct? User or not, same thing है. User Alice has one follower. Alice has one follower, Bob, right? User Alice has one follower. Alice is a not second degree follower because she does not follow anyone. So we do not include her in the result table. Clear hai? Clear hai? I think question is pretty much clear, right? So what we want here, guys, we want the second degree user who at least follows someone. So like this Bob, he's following Alice and also being followed by someone. So like Bob is followed by Sina and Donald, right? Cool. So likewise, we have to figure out, guys, is the question clear? At least tell me a yes or no in the chat. So if you are able to understand the question, this is a good question. I mean, we still need few group buys, some joins and all that. We'll see. Question clear, guys? A quick thumbs up in the chat. Cool. Great. So again, just give me few logical explanation, guys. Just give me few English sentences. What exactly you feel about this? So I mean, what do you think? How can we solve this? Do you have any suggestion here? Just few pointers, guys. Give me a few English sentences. What do you think about this problem? How can we solve this? Okay. So somehow we are still able to gauge that we need some kind of count on top of this, right? So I mean, definitely count of my followers is also important here, right? So what if we create a table? So we create a view table, a temporary table, as we always do in some of the problem case statements, right? And in this, we're gonna write down my followee name. So the followee name, and then we have the count of that followers. So basically, for each of my user, I'm gonna count my number of followers, right? So we're gonna take a group by on top of this anyway, because if we need a count by some followees, so we need to have the group bys done, right? So we're gonna do that. But again, post doing this, so once we have done that, we can also figure out. So once this table is created, so we can then join this table
maybe with the original table. So in this case, what we'll have, so original table has the followee and the follower, right? So I'm trying to add the number of followers also on top of this. You're getting it? Right? So basically trying to create a sub table in which along with my followee and the follower, I'm adding up my count also on top of this. Will that work? Looks like it works. So what I'm saying is, so let me just write down some of the flow which I'm thinking of. So maybe we can create create a view table. So we're gonna create a new table with in which I have, so what I have, so I have my followee number. So I mean each of my followees, so followee name and count of followers. Okay, so I want these two information in my table. So this is gonna be my table A, for example. So this A has two columns, followee name and the count of followers. अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I would need to take group by and count. ठीक है, so we can create this table A. Now what we can do is, so the original table जो follow है, follow को हम इसके साथ join करा देंगे. Cool. So follow का अगर इसे join कराएंगे, so इस सब का मेरा क्या output होगा? At the end we'll be having an output of followee, we'll have follower, and then we have count. Right? So this entire thing will result in these three things. Cool. We can do this, right? So once we have all of this information, so now I have all of my detailed information here, and definitely because logic would be what? So followee would be equal to follower. So that's what we'll be doing, right? That's what we want. So that's gonna be my on condition. And finally, what we have this. अब इस पूरे टेबल में से फाइनल टेबल जो होगा, and from this, if I simply just take my follower, I mean distinct of my follower, unique distinct, I mean follower unique, I'll take, right, unique, and iska count. This is what we want, right? Logically making sense? Guys, just say yes or no if we're able to logically connect this part, guys. Right? I hope logically it is totally making sense, right? Cool. ठीक है. So simple, exactly जो ये मेरा logic है ना, I'm gonna just apply the same in the code below. Okay. तो सबसे पहले I'm gonna create this view table. So view table को बनाएंगे and then we're gonna join this up. Okay. So view table क्या है मेरा यहाँ पे? So view table में मेरे पास जो निकल करके आ रहा है, so I have my select में क्या बोलूँगा? So I mean, see again, just gonna do this. I'm gonna write the whole flow first, so that'll become easier. So select, sorry, from, where, and then group by having, then I need order by, and then I want limit. So this is my core structure, right? So what I'm saying is, just put this up for now. So select, in the select what I want the follower name and the num, right? So this is what I want here. So I'm gonna just put it up for now. This is a logical representation. We'll see how to write this. So follower name and the num. From what? So from may I'm gonna do up this logic. So from I'll be saying follow join my view table. This is what I was talking about, right? So view table. Cool. So this is what I'll be doing, and then join का definitely on condition भी होगा यहाँ पे. So on, we'll be seeing क्या होगा on condition. From का part done है, and then where, group by, and all that, we'll see what all we need. Order by may we definitely know, so what we need. So order by may we need to follow. I will do it in terms of my follower. Follower. Limit नहीं चाहिए हमें, ठीक है? This is a logical representation. Let's see what all we need here, है ना? First, let's try to create this view table. So इस view table में क्या है मेरे पास? Logically मैंने क्या बोला? I need the count and the followee name here, right? So followee name and the count we want. So what can we do here? So we need select. So we need the followee, and
we need the count of something, so we'll see what. So something, and then followee, and then something, and then we're gonna have from follow, and this time because it's again a representation, let's say follow like a, for example. So follow is gonna be my follow a table, and since we're gonna do the counts, we're gonna do a group by also. Group by what column exactly? So in this case, I'll be group by in list with follow e. So for each of my followee, how many followers are there? So that's basically I'm trying to do here, right? So that's what I'll be having. So group by followee, and yeah, so it's gonna be a dot followee, and then followee again. So it's gonna be my a dot followee, and count of what? So count of my follower, right? So count of my follower, and definitely for the follower, I also need a distinct of follower. Distinct. Cool. And this is gonna be as my say count, for example, and then I'll be having this is gonna be my view table, right? So this I'll be this again, this whole thing, so this whole thing has to be given some name to be called upon. So I'll be giving this B, for example. This is gonna be my table table B here, and cool. Okay, so now what we'll be doing in this case, let's see. So this is fine. So on condition में क्या होगा? So on क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? This is my view table, right? So on क्या होगा? So मेरा इसमें follower और followee should be same, right? So definitely. So follow, इसको मैं इस follow को मैं क्या कर देता हूँ? इस follow को C कर देता हूँ, for example. So नहीं follow ही रखता हूँ for same namesake. Follow dot मेरा follower should be equal to my this current table. So current table B dot. So this from this table I want my followee, right? So on follow dot follower is equal to B dot followee. So B is like my this view table, right? So this is from where I want to join it. Cool, simple है. So this condition is pretty much clear, है ना? अब ये मेरे पास आ गया where. So now where group by null is not needed because we have already done that in this. हमने यहीं पर ही कर लिया इसको. तो this we don't need. And now we have the table done. So we have the count also available. And now on top of this entire data, what we need? So we need the follower name and the count of the thing. So follower में क्या होगा मेरे पास यहाँ पे again. So follower क्या है मेरे पास यहाँ पे? Basically मेरे पास जो पहला table है. So this from this table itself we can just find out follow dot follower and num क्या है मेरा basically यहाँ पे? Okay, so मेरे पास जो फाइनल टेबल में से आ रहा है, जो मैं बी टेबल का जो काउंट है, सो इट्स गोना बी बी डॉट count, and we're gonna call this as num. So num is what my output we need, right? So this is what we need. We have the count here, and we have the from condition done. Order by follower. So follower again, we have to define my what? So we need it through my first data. So definitely it's gonna be my follow dot follower. Cool. Logically makes sense, guys. समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? So इसमें बस जो मैंने एक इसमें क्या करा सॉल्व करने के टाइम पे, बिकॉज देखो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा. ज्वाइन क्या करा मैंने, बिकॉज in the output we need both the things. So we need the follower, the person who is a second degree user basically, and also उसका number of followers. So number करने के लिए definitely group wise तो करना ही पड़ेगा. तो मैंने क्या करा, सबसे पहले वही निकाल दिया. सबसे पहले मैंने क्या निकाला कि for each of my followees उसके कितने number of followers हैं. तो मैंने एक टेबल में कर दिया उसको, followee को followers के साथ ऐड कर दिया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ for यहाँ पे, अब नाउ फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल फॉलो जो मेरा यहाँ पर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जब तक मेरा फॉलोवर जो है वो फॉलोई को मैच नहीं करेगा, सो मतलब मेरा ओरिजिनल टेबल में जो फॉलोवर है वो मेरा इस करंट टेबल के फॉलोई को मैच नहीं करेगा, तब तक वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा. और उसको तभी ज्वाइन करेगा जब उसका फॉलोई है, और फॉलोई तब होगा जब मेरे पास यहाँ पे उसका काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट फॉलोअर मेरे पास अवेलेबल है. समझ में आ रहा है? और अगर उसका कुछ काउंट, अगर वो काउंट आएगा ही नहीं वहां पे, अगर उसका कुछ भी नहीं आएगा तो नल हो जाएगा बेसिकली वहां पे, करेक्ट. और वो तभी ज्वाइन करेगा जब यहाँ पे मेरे पास उसका काउंट है. काउंट में एटलीस्ट वन चाहिए. एटलीस्ट वन इज द लॉजिक फॉर माय
सेकंड डिग्री यूजर, राइट? सो वो वहीं पे उसको ज्वाइन करेगा. सो अब यहाँ पे मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगा, दैट इज फॉलोइंग द सेकंड डिग्री यूजर का लॉजिक, दैट इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक, दिस इज डन हियर, राइट? अब इसमें से वी आर जस्ट गेटिंग द फॉलोअर का नाम एंड द काउंट. काउंट तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका था. सो यहाँ पे मैं इसको नेम भी काउंट ही कर दिया था. सो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस बी डॉट काउंट हियर. अगर मैं इसको सपोज सी एन टी करता, so I would have called here b.cnt. I'll just count cnt only, so it'll be easier for you to do not get mixed up. है ना? Cool, simple logic है. Now let's try to comment this out. Let's try to run it. Cool, simple है. So I have the follower, follower and the followee, and then likewise Bob and Donald and all that. So that's fine. Let's try to submit this. रॉन्ग आंसर. ओके, क्या रॉन्ग आंसर आया यार? कुछ एज कंडीशन हो गई क्या? ओके, विल सी क्या है ये एज कंडीशन. कुछ तो मिसिंग हो गया इसमें. ओके, ये एज कंडीशन देखते हैं यहाँ पे. सो वी हैव द फॉलोई एंड द फॉलोवर. ओके, सो आई हैव हेडर है, एंड देन आई हैव कैरोलिन एंड रॉबिन. ओके, सो ओके ओके ओके, ये जैलिन जो है 2 बार आ रहा है. ओके, जैलिन 2 बार क्यों आ रहा है? डिस्टिंक्ट नहीं करा क्या मैंने? अच्छा, सो follow dot follower. Okay guys, look at this error. So what we are getting here is in some odd scenarios where जहाँ पे वो 1 1 दोनों 1 1 ही रह गया, तो वो एक एज कंडीशन पकड़ लिया उसने. तो यहाँ पर इसने उसको 2 को 2 बार शो किया. दिख रहा है आपको आउटपुट में? मेरा आउटपुट ये है, बट एक्सपेक्टेड में जैलिन को 1 बार आना चाहिए. काउंट वाउंट तो कर रहा है. सो हम क्या कर सकते हैं इसमें? डेफिनेटली जब मेरे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे डिस्टिंक्ट कर दूं, अगर मैं इसको डिस्टिंक्ट कर दूं, सो आई गेट दैट, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग. अब खुद ही ट्रबल शूट कर सकते हो. तो बिकॉज ये आउटपुट में मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे पास ये सेम चीज 2 बार रिपीट हो गई. यहाँ पे कोई एक एज कंडीशन होगा जो वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट. सो डेफिनेटली इन दिस केस यहाँ पे इसको डिस्टिंक्ट से मुझे शो करना पड़ेगा, है ना? अब एक बार सबमिट करने का ट्राई करते हैं. हो गया. कूल, फेयर इनफ, सिंपल है. तो अगेन ऑलवेज गाइस, डू नॉट गेट कंफ्यूज. अगर कुछ एरर आती है तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, है ना? वो हम ट्रबल शूट करेंगे, बट डू नॉट गेट वरीड इफ वन फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ यू नॉट एबल टू गेट इट, है ना? कोई नोबल प्राइज नहीं मिल रहा है इसको करके. प्रैक्टिस के लिए ये है, ठीक है? कूल, सो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. समझ में आ रहा है गाइस? क्विकली यस और नो. आज क्लास थोड़ी शांत है यार. आई मीन पीपल आर नॉट स्पीकिंग अप. Or am I being too fast here? Any feedback? Are you able to understand it? Guys, yes or no? If I'm able to make the things clear to you, or you're able to get this, any issues or anything? Okay. जो नहीं समझ में आया प्लीज बताना, ठीक है? अगर इन केस ओके ओके ना यार, नो प्रॉब्लम. अगर जहाँ पे भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो प्लीज स्पीक अप. सो विल टेक, अगर कोई इशू है तो. चलो लेट्स सॉल्व दिस वन. ओके, इट्स एन हार्ड प्रॉब्लम. ओके, इंटरेस्टिंग. लेट्स डू दिस. सो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगा इसमें, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. Okay, so as always, do not get confused guys. Even if it's a hard problem, पहले logic build up करेंगे and then we'll code. ठीक है? So we're gonna have my inputs here, then we're gonna have my outputs here, and then we're gonna have my constraints. We're gonna have flow, है ना? देखते हैं चलो. So I have my table salary here, and I have all of these information. Let's copy this at one place. So we have ID, employee ID, amount, pay date in your table, है ना? So ID is the primary key. So this ID is my primary key, and then I have employee ID, amount, and pay dates. Fine. So each row of this table indicates the salary of an employee in 1 month. Okay. Okay, so amount जो है आपका salary है, basically 1 month का salary. Salary
1 month. ठीक है, cool है. So employee ID is the foreign key from employee table. Okay, so we have another table here. ये भी लिख लेते हैं. सिंपल है टेबल. मेरे पास एम्प्लॉई भी है. इसमें क्या क्या है मेरे पास? एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी है. ठीक है. सो एम्प्लॉय आईडी इज द फॉरेन की फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ठीक है. सो दिस इज माय एम्प्लॉय आईडी. तो ये मेरा फॉरेन की है. यहाँ पर इज माय फॉरेन की. अब फॉरेन की क्या है गाइस? क्विकली यू नो दैट ऑलरेडी. फॉरेन की इसलिए है बिकॉज एम्प्लॉय आईडी इज शुड बी माय प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल and part of my another table, but it's not a primary key, it's a candidate key. It could be a primary key, but it's not a primary key. Yeah, right. So that is the reason why it is foreign key. And simple देसी भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर आपको सैलरी और एम्प्लॉय को ज्वाइन करना है, if you want to join these two tables, that's gonna be the joining condition because this is a foreign key, the connecting link between the two tables, right? So that is why it is called as foreign key, right? So now the thing is, employee ID is the primary key of the column as expected because it is a foreign key. It has to be a primary key of my other table. That is mandatory. So this is correctly mentioned here. And each row of this table indicates the department of any employee, right? So basically here for all of this employee ID, I have the department ID. So basically हम क्या करेंगे? अगर हम इस टेबल में अगर हम इसके अगेंस्ट में अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हियर फॉर दिस टेबल, सो विल गेट for all of these records what is the department ID, for example, right? Simple है, nothing fancy I'm doing it here. But so question पढ़ लेते हैं. So the question says write a SQL query to report the comparison result higher, lower, same of the average salary of employees in a department to the company's average salary. समझा नहीं मैं क्वेश्चन यार. Write a SQL query to report the comparison result, okay, higher, lower, same, of the average salary of employees in a department. Okay, so department wise average salary of employees को compare करना है पूरे कंपनी के average salary से. यही है ना? हाँ. So write a SQL query to report the comparison result higher, lower or same of the average salary of employees in a department. So per department में सारे employees की जो average salary है वो कंपनी के average salary से कम है, ज़्यादा है या same है. This is what they want, right? If I've understood the question correctly, guys. Let me know if you are able to decode this question, or if not, or if my understanding is wrong, please let me know that. So what I've decoded this is average salary of employee per department, whether it is same, high or low, compared to average salary of employee in entire company है ना. चलो, और ये आउटपुट एक बार क्वेश्चन वापस या डेफिनेटली सूरज विल सी द एग्जांपल आल्सो टू जस्ट टू बी क्लैरिफाई, बट एक बार मैं नोट डाउन कर लेता हूँ. सो रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर. सो कांस्टेंट में क्या है? नो ऑर्डर कांस्टेंट. सो द क्वेरी रिजल्ट फॉर्मेट इज द फॉलोइंग. एग्जांपल हम देख लेते हैं एक बार इसको. सो एग्जांपल में क्या है मेरे पास? आई हैव द सैलरी टेबल एंड द एम्प्लॉय टेबल, है ना. So salary table क्या है मेरे पास? Okay, employee ID 1, 2, 3 and all that. So department ID employee ID 1 और employee ID 2 and employee ID 3, है ना. Okay, so 2 and 3 जो है मेरा department ID 2 से belong करते हैं and employee ID 1 जो है यहाँ से belong करता है. So अभी मेरे पास employee ID 1 है तो उसका 2 सैलरी है मेरे पास, 2 का भी 2 सैलरी है, 3 का भी 2 सैलरी है. ठीक है. सो 1 का मैं देखता हूँ. सो 1 का 2 सैलरी है मेरे पास, एक तो 9,000 है और एक 7,000 है. सो 9 7 16,000. 16,000 रुपये डिवाइड बाई 2 मतलब 8,000 रुपये इसका एवरेज सैलरी है. करेक्ट. 8,000 रुपये इसका एवरेज सैलरी. 8,000 रुपीज एवरेज सैलरी फॉर एम्प्लॉय 1. करेक्ट. एंड 2 का क्या होगा? सो आई एम जस्ट नोटिंग इट डाउन. सो हम एक बार वापस से कंपेयर कर लेंगे. सो एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 1 क्या है? 8K. कूल. क्लियर. इसमें किसी को कोई डाउट है? एम्प्लॉय 2 लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 3 लिखता हूँ एंड देन कंपनी का लिखता हूँ. ठीक है. और डिपार्टमेंट का भी लिखता हूँ. डिपार्टमेंट 1 का भी लिखता हूँ, डिपार्टमेंट
2 का भी लिखता हूँ, फिर कंपेयर करके हम देखते हैं। यही सब चाहिए ना हमें। ठीक है, 2 का क्या है यार, 2 का मेरे पास क्या है, 2 का मेरे पास 6000 है और 6000 है, तो इसका एवरेज भी क्या होगा, 12,000 बाई 2 मतलब 6K है ना। 6K इज गोना बी माई एवरेज सैलरी हियर। एंड एम्प्लॉय आईडी 3 क्या है, 3 है यहाँ पे, 3 and 3, सो 10,000 and 18,000, तो इसका हो गया 18, 10,000 18,000 हो गया ना, 9K, 18,000 डिवाइड बाई 2 इज 9K। सो ये तीनों मेरे एवरेज सैलरी हैं, है ना। कूल है। और अगर मैं अगर मैं पूरे कंपनी का एवरेज सैलरी देख लूं, सबके सम मतलब 9,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, क्या होगा इसमें। सो बेसिकली अगर मैं इन तीनों का भी एवरेज लूँ उतना ही होगा ना। सो तो देख लेते हैं। सो 9 6 15, 15 15 10 25, 25 7, 32, 32 plus 6, 32 plus 8 is 40, 40 plus 6 is 46, 46 divide by 6, so company का क्या हो गया, 46 divide by 6, that's gonna be roughly how much guys, 42, so roughly I think 7K बोलूँगा, 7.75 बोलता हूँ, 7.5K रफली है ना। तो 7.75K रफली आ रहा है मेरे पास कंपनी का एवरेज, है ना। अब डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट का क्या होगा, ओके, सो डिपार्टमेंट में मेरे को एम्प्लॉय आईडी से निकालना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव डिपार्टमेंट आईडी 1, सो 1 का क्या है, दिस। सो डिपार्टमेंट आईडी 1 में कौन है, एम्प्लॉय आईडी 1 है। सो जो एम्प्लॉय आईडी 1 होगा उसी का डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट 1 का एवरेज सैलरी भी 8K ही होगा, बिकॉज आई ओनली हैव 1 एम्प्लॉय इन दिस केस, राइट। एंड डिपार्टमेंट आईडी 2 में क्या होगा, आई हैव 2 एम्प्लॉयज हियर, 2 and 3, सो 2 and 3, सो 6 and 9 का एवरेज आई हैव टू टेक। सो 6 and 9 का एवरेज क्या हो जाएगा, सो 6 9 15, and it's gonna be 15 divided by 2, so it's gonna be 8.5 है। सही किया ना मैंने, यार क्या बोल रहा हूँ, 7.5 ना, नहीं 15 ना, 7.5 एग्जैक्टली, 7.5K, दिमाग खराब हो गया मेरा। ओके, सो 46/6 है ना। सो बेसिकली मैं अब इस केस में क्या हुआ मेरे पास, ओके, अगर मैं 45 बोलता तो मैं बोल रहा हूं कि वो 7.5 है, बट वो 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा है बिकॉज 46 है, राइट। सो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, डिपार्टमेंट 1 जो है, डिपार्टमेंट 1 की जो सैलरी है वो ग्रेटर देन में कंपनी के एवरेज है ना। सो डिपार्टमेंट 1 का जो एवरेज हुआ, दिस इज ग्रेटर देन कंपनी का एवरेज, राइट, because here in this case 8K is bigger than 7.75K roughly, right। and डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट जो 2 है उसका एवरेज इज लेस देन कंपनी का एवरेज, विच इज, सो इन दिस केस 7.5K is less than 7.75K, cool। so this is what, so here in this case आउटपुट में क्या चाहिए इनको, अरे यार मंथ वाइज चाहिए क्या यार, इतना कैलकुलेशन खराब कर दिया क्या मैंने, ओह फक मैन, क्या कर दिया मैंने। सो इज ओके, व्हाट इज, सो व्हाट आई वांट, सो नहीं ठीक है ना, ये दोनों को इस तरह से बोला नहीं, दैट इज इक्वल टू कंपेयर रिजल्ट ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट तो कंपनीज एवरेज सैलरी, यार मंथ तो ऐसा कुछ बोला नहीं इसमें, मंथ तो बोला नहीं, मंथ वाइज कर रखा है इन्होंने, ओहो, ओके, बट ठीक है, आई थिंक लॉजिक वॉजिक तो समझ में आ गया ना आपको। अभी जो मैंने इसमें ये कर दिया ना, ये थोड़ा फंडा गलत हो गया। सो अभी मंथ 1 में क्या हो गया यार, मंथ 1 में एम्प्लॉय आईडी 9 है, सो डिपार्टमेंट 1 का हो जाएगा 9, सो 9 जो है हाइयर है ना, डिपार्टमेंट 1 जो है मेरा हाइयर है। पे मंथ से निकालना पड़ेगा, मंथ भी इंपॉर्टेंट है मेरा यार, मंथ भी इंपॉर्टेंट है, मंथ, ओके। सो पे डेट, डेट से नहीं निकाला, पे मंथ से निकाल रहा है यार ये। सो इस डेट में से मुझे मंथ भी निकालना पड़ेगा, है ना। सो आई नीड व्हाट आई नीड इन दिस केस, सो आई नीड आउटपुट में मेरे को ये सब चाहिए। सो आउटपुट में ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। सो पे मंथ, डिपार्टमेंट आईडी और कंपैरिजन चाहिए। सो मंथ के हिसाब से डिपार्टमेंट आईडी एंड कंपैरिजन, okay, and see this, there's a format change also guys, so I think this format also I have to look, है
ना. सो ये फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा हमें इन आउटपुट, है ना. तो 2017-02, सो इसमें से मंथ निकाल करके एंड देन वी हैव टू फिगर आउट दिस. चलो एक बार एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. सो इन मार्च द कंपनीज एवरेज सैलरी इज, मार्च में क्या है, मार्च में इसका 3 पे डेट्स है ना. सो 9,000, 6,000, 10,000. सो 9,000, 6,000, 10,000 बाई 3, 8,333. ठीक है. The average salary for department 1 is 9,000, which is the salary of employee ID1 since there is only one employee. Correct. इसमें कोई दिक्कत नहीं है because यहाँ पे 9,000 का एक ही पे आउट है for department ID1. ठीक है, सिंपल है. तो so which is okay, और क्या यार, since there is only one employee, so the comparison is higher because 9,000 is greater than 8,333, obviously. Correct. So the average salary of department 2 is 6,000 plus 10,000. So we have two people here, 2 and 3. So 2 and 3 here. So 6,000 plus 10,000 is 16,000 divided by 2. That is 8,000, which is lower than 8,033. So it's going to be lower. Okay. So I have for the month 3. So I have 1 as higher and 2 as lower. Cool. Fair enough. Likewise for others, we're going to find out. So with the same formula for the average salary comparison in February, the result is same since both the department 1 and 2 have the same average salary with a comparison which is 7,000. Cool. ठीक है. लॉजिक तो क्लियर है. थोड़ा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये guys. I mean थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, what I can see definitely, but I don't think logically it is difficult to understand. Anybody is having any concerns in understanding the question first? अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी, तो जस्ट डू लेट मी नो क्विकली गाइस. अगर क्वेश्चन समझने में किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है. क्विकली गाइस, क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? जस्ट अ क्विक यस और अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गाइस, क्विकली. चलो ठीक है. एंड मीनवाइल गाइस, जस्ट गिव मी फ्यू हेड्स अप. आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे इसको? सो व्हाट आर यू थिंकिंग हियर? I mean, give me some English sentences again as always. Some logical understanding जो आप जिस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हो, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मतलब किस तरीके से आपको लग रहा है इसको सॉल्व करना चाहिए? हाँ, कंपनी एवरेज इज ऑल्सो पर मंथ यार. यस, कंपनी एवरेज इज ऑल्सो पर मंथ. वो भी पर मंथ का ही कंपैरिजन है. सो देखो, दिस इज द रीजन वाई हम पर मंथ यहाँ पे ले रहे हैं ना, आपको दिख रहा है. सो पर मंथ इज इंपॉर्टेंट हियर. सो पर मंथ करना जरूरी है ना. सो again, what again, give me guys, so give me some few comments, few pointers जो आप इसमें सोच सकते हो. देखो अल्टीमेटली मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें. समहाउ देखो, हायर लोअर और सेम तो करना ही करना है हमें, है ना. सो आउटपुट में हमें हायर लोअर सेम तो करना ही करना है. सो हम क्या कर सकते हैं, somehow we can have this higher lower same जो सिंपल केस स्टडी है, केस स्टेटमेंट है, राइट. सो व्हेन जहाँ कंपैरिजन करूंगा देन डालूंगा, है ना. सो वो हम तो सिंपल अपने सेलेक्ट आउटपुट में डाल सकते हैं. सो whenever we'll be writing this comment, right, so we'll be writing this पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हायर लोअर और सेम जो लिखना है, वो तुम सेलेक्ट केस के थ्रू हम अपने सेलेक्ट में लिख देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इधर मेरे को दो चीजें दिख रही है ना. सो two different things here. The thing is, I need to first format based on my month, right. So month को पहले मुझे फॉर्मेट की तरह निकालना पड़ेगा, है ना. सो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सो मेरे पास जो अभी यहाँ पे एट द मोमेंट जो मेरे पास सैलरी टेबल है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो मेरे पास सैलरी टेबल है, मेरे पास में पे डेट है ना. अगर इस पे डेट में से, अगर मैं इस पे डेट में से ही अगर मैं इसको डेट फॉर्मेट में करके निकाल दूं, सो ईयर और मंथ करके निकाल दूं, तो मेरा ईयर और मंथ निकल जाएगा, करेक्ट. और मैं इसी इसी इंफॉर्मेशन पे क्या करूं कि मैं इसको ग्रुप बाय भी कर दूं, है ना. सो ग्रुप बाय कर दूं पे डेट पे ही, जो मेरा मंथ का ऑप्शन आएगा, है ना. एंड और मैं क्या कर सकता हूं इसमें,
इसमें मेरे को कंपनी का भी तो चाहिए ना, तो कंपनी का चाहिए। सो कंपनी का मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल पूरे 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 अच्छा, ओके ओके कूल, फेयर इनफ। एक पे काम करता हूँ, एक व्यू टेबल में आई जस्ट टेक आउट द इंटायर कंपनी का एवरेज। ओके, सो जस्ट अ ग्रुप बाय ऑन माय पे डेट एंड टेक द एवरेज ऑफ इंटायर थिंग। जो इसका आउटपुट मेरा सिंगल एक कॉलम, सिंगल एक रो आएगा, ठीक है। So I'm creating first table. So I'll write it down again, but I'm just thinking loud here. So I'll be creating one table in which I could just create the entire for every month. So for every month, every pay date, group by my pay date and month. What is the average of my entire company? So I can just do that. Group by on my entire for the entire data set I have. Okay, that is one thing. And second, what I can do is I can create another table. So in this case, I'll be finding out per department. So per department, I mean I have in terms of my average. So अब इसके मैं क्या करूँगा? For this table, I'll have to join my employee table with the department table, right? Again इसमें group by में department ID and payment कर लूँगा, cool. So इसमें again ये दोनों आ जाएगा. So this is and इस दो टेबल को अल्टीमेटली मैं ज्वाइन कर देता हूँ. So and okay, I'm just gonna write down my logic here. So what I'm thinking, okay. So just try to follow my thought process, है ना. So I'll create I'll create two new view tables, ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करूँगा? The first table would be the okay, so per department average, per department per month average, ठीक है. This table will give me per department per month average salary, okay. And the second view table will give me per company, yes, I mean just like company wise, per company तो कुछ नहीं, company wise per month average. Cool. So I'll create these two tables, two different tables completely, ठीक है. So where I'll be having per department per month का average and company wise per month का average. So ठीक है. And then इस table, दोनों table को मैं join कर दूंगा. So I'll just join these two tables. अब again इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर if I want to have per month per department per month, so for this also internally I would have to join my salary table, join my अंदर टेबल का नाम क्या है यार? एम्प्लॉय टेबल, है ना. इसमें मेरे को ग्रुप बाय क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी एंड मंथ. कूल. This is going to be my first table का logic, and this is a separate join, and here in this case I'll be doing simple है. So overall average ले लूँगा, average of my salary uh, per month. So group by basically group by month. Cool. So that's gonna be my two thing. ये separate table है, ये separate table है. अब इस दोनों को मैं join कर दूंगा, ठीक है. अब इस दोनों को मैं join कैसे करूंगा? मेरा जो month हो, so basically सबके पास इसमें ultimately I have the months here, right? So I'll be having now on these two tables will be joined on these two tables will be joined on if this is my table A for example and this is my table B for example, so I'll be joining on A dot month is equal to B dot month, ठीक है. So अब मेरे पास जब मैं इन सब को कर दूंगा finally all of this, so this entire thing will be giving me per ID per department per month average. Also same time में next column में I'll be having my company average also. So these three things I'll be having in the same place, same table में आ जाएगा मेरे पास, right? अब इन टेबल में से मैं क्या कर सकता हूँ? फाइनली जब मैं सेलेक्ट लिखूंगा तो सेलेक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे सेलेक्ट मेरे पास जाएगा डिपार्टमेंट. क्या चाहिए मेरे पास आउटपुट में? मेरे को मंथ चाहिए. सो सेलेक्ट I'll be having my month. So select हो जाएगा मेरे पास मंथ, तो एनीवे है ही मंथ, और मैं डिपार्टमेंट आईडी एंड कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे मैं केस स्टेटमेंट लिख दूंगा, केस स्टेटमेंट फॉर कंपैरिजन, ठीक है.
ये लॉजिक समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? सूरज, करेक्ट, आप बिल्कुल आई थिंक सही कह रहे हो. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड मंथ, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो फर्स्ट वी नीड टू जॉइन दोस टू टेबल्स फॉर ग्रुप बाय पर डिपार्टमेंट. यस, फर्स्ट टेबल में मैं एग्जैक्टली वही करूंगा. कूल. लॉजिक क्लियर हो रहा है गाइस सबको? जस्ट अ क्विक थम्स अप. ये अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा देन आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी यार. गाइस क्विकली अगर लॉजिक समझ में आ रहा है, जस्ट अ क्विक थम्स अप. ओके, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस विद द सेम लॉजिक. ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले हम ये टेबल पे काम करते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व मेक दिस टेबल फर्स्ट. चलो, आई एम गोना कीप दिस इंटायर थिंग. इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, ये ना पूरे लॉजिक को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट विल ट्राई टू रिप्लेस दिस विद द कोड्स नाउ. ठीक है, सो आई हैव इट हियर, है ना. सो अभी मेरे पास, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस टेबल फर्स्ट. ठीक है, एंड आई एम क्रिएटिंग माय फर्स्ट टेबल. अब फर्स्ट टेबल में क्या कह रहा हूं मैं? मेरे को क्या चाहिए? सेलेक्ट, ओह शिट. सो मेरे को क्या चाहिए? पर डिपार्टमेंट पर मंथ माय एवरेज सैलरी, है ना. सो मेरे को इसमें क्या चाहिए? मेरे को चाहिए इसमें डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और अमाउंट का भी एवरेज चाहिए और मेरे को डेट फॉर्मेट भी चाहिए, है ना. सो मैं क्या करना पड़ूंगा इसमें? सो मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, सो आई वांट सेलेक्ट, I'm just writing a logical representation first. So it's gonna be my department ID and I want average of my amount, है ना. amount ही है ना, average of my amount and then I want month. So month में हमें निकालना पड़ेगा, month का logic निकालता हूँ मैं. So ये तीन चीज मेरे को चाहिए इसमें से. from what? So from my salary table, two tables है ना, salary और employee. So from salary join employee, है ना, employee on my क्या है यार, एम्प्लॉय आईडी है ना. सो सैलरी डॉट, आई मीन सैलरी को मैं क्या कर रहा हूँ? सैलरी को मैं ज्वाइन करा रहा हूँ एम्प्लॉय से एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ना, एम्प्लॉय आईडी. सो बेसिकली हियर इन दिस केस विल बी एम्प्लॉय आईडी. सो कहाँ गया ऑन, मैं क्या बोल रहा हूँ? सैलरी डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, ये कंडीशन है मेरा. ये तुमने टेबल जॉइन हो गया. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बाय करना पड़ेगा. ग्रुप बाय ऑन व्हाट? सो ग्रुप बाय मैं बोल रहा हूँ बेसिकली मेरा डिपार्टमेंट आईडी. सो डिपार्टमेंट आईडी जो होगा मेरा, डिपार्टमेंट आईडी क्या है यार? सो ये पूरा है डिपार्टमेंट आईडी, लिखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी. एंड डिपार्टमेंट आईडी के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? पे मंथ चाहिए. सो पे मंथ, पे मंथ, पे मंथ में कैसे करूँ? इसमें मंथ निकालना पड़ेगा ना मुझे. सो रिस्पेक्टिव टू माय पे मंथ. तो मैं पे मंथ कैसे निकाल सकता हूँ इसमें से? पे पहले तो मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा. सो फॉर्मेट ऑफ माय मंथ एक्चुअली. सो इन दिस केस काम करता हूँ. ठीक है, चलो डिपार्टमेंट आईडी तो हो गया मेरे पास. डिपार्टमेंट आईडी का सॉर्टेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. डिपार्टमेंट आईडी के साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास एवरेज ऑफ अमाउंट के साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं है. एंड मेरे पास मंथ. सो मंथ को मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन यूज इनबिल्ट फॉर्मेट. डेट फॉर्मेट होता है ना, डेट क्या होता है? डेट फॉर्मेट ही तो होता है, डेट फॉर्मेट. ठीक है, डेट फॉर्मेट को यूज करते हैं. So date format में we have the pay date here, so we can use this pay date. So it's gonna be my pay date. And pay date में मुझे format क्या करना है इसको? I think मेरे को चाहिए month और क्या चाहिए था मेरे को? हाँ, year और year hyphen month. So मेरे को क्या चाहिए? year
hyphen month. So year is Y, month is M, है ना? So we're gonna write it as like year percent Y hyphen percent M. Cool. So I'm just gonna format this data because this is the format they need, right? So I'm gonna and then I'm gonna uh, oh my bad. Okay, so it's gonna be like this. So I'm gonna rename this to okay. So just rename this to pay what? Pay month. So pay underscore pay month. Okay, and then we can use this pay month for our group by here. Cool. So from salary, join join employee on my salary dot employee is equal to this and group by, so group by these two. Cool. So this is my final table. So this is the table which will be giving me the average of my entire salary per department per month. Cool. This logic is done. चलो. Now this is the table I have here, right? So अभी मैं काम करता हूँ इस पूरे को एक टेबल बना करके एक इसका नाम दे देता हूँ A. So this is my table A. ठीक है. अब इस टेबल को मुझे ज्वाइन करना है इसके साथ. So ज्वाइन यहाँ पे as it is छोड़ता हूँ. And this is my second table. So I have company wise per month average salary. है ना, company wise per month average salary. तो मैं इसमें क्या निकाल सकता हूँ? ओके, सो कंपनी वाइज पर मंथ एवरेज सैलरी. तो मेरे को पूरे टेबल का मेरे को एवरेज चाहिए बेसिकली, है ना. ये सिंपल है. सो मेरे को क्या करना है? सेलेक्ट एवरेज ऑफ अमाउंट. सो एवरेज ऑफ अमाउंट एंड देन आई हैव my payment. So payment again I can use the same logic here. So this is gonna be my this. So date format as pay month. So this is gonna be my date format, and I'm gonna take this from my salary table, from salary, and then I'm gonna be doing a group by on just the date format. Group by I just want it on the date format basically. So I just want it on the date format again. So I'm just gonna pull it up. So it's gonna be date format of group by of date format of pay of date hyphen Y and M. Cool. So this is fine again. So I am having this entire thing and this is gone now. So I have this as my table A and this is my okay, so this entire is my table B. Cool. I mean, yeah, obviously, sorry, yeah, my bad. So I think so yes, we can, instead of this, we can simply write pay month. So we have already written this. My bad. Cool. Yeah. So very well pointed out, Suraj. Yes. So it's gonna be group by A and group by B. So ये दोनों चीज हो गई. अब एक काम करता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ. ठीक है. ज्वाइन कैसे करूंगा? अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस दोनों टेबल को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ फॉर एनी केस, तो मेरे पास ज्वाइनिंग का लॉजिक क्या है? ज्वाइनिंग का लॉजिक मेरे पास मंथ है, राइट? सो इट्स गोना बी on A dot pay month is equal to B dot pay month. Cool. So now this entire thing is my final table now. समझ में आ रहा है? So now this entire thing is my final table, जहाँ पे मेरे पास actually में for each of for the company averages and also the department average मेरे पास available है. So मेरे पास एक ही टेबल में department average, पे मंथ और कंपनी एवरेज, ये तीन कॉलम है. अब मेरे पास बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके आउटपुट में क्या है? मेरे पास इन दिस आउटपुट आई हैव द डिपार्टमेंट आईडी, आई हैव द पे मंथ एंड आई हैव द कंपनी एवरेज. ओके, सो दिस को मैं रीनेम कर देता हूँ एज कुछ है क्या, एज दिस लाइक कंपनी एवरेज. ओके, सो मेरे पास ये कंपनी एवरेज है यहाँ पे. हाउ कूल इज दिस? सो आई हैव दीज थ्री कॉलम्स एट द सेम प्लेस नाउ. अब सिंपल हो गया ना, यहाँ पे सिंपल हो गया. अब यहाँ पे अगर मैं क्या बोलूंगा, अगर ये डिपार्टमेंट सो डिपार्टमेंट आईडी एवरेज मंथ एंड फॉर्मेट, नहीं, इसको मेरे को करना पड़ेगा एज डिपार्टमेंट एवरेज. ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है ना. अब मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट एवरेज है
पे मंथ है और कंपनी एवरेज है। कूल। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसमें सिंपल केस लगा दूंगा, पर पे मंथ, है ना, सिंपल इफ माय डिपार्टमेंट एवरेज इज लेस देन कंपनी एवरेज, बिकॉज ऑफ द सेम रो में आ गया ना, सिंपल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं हाई, लो और सेम डिफाइन करूंगा। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर। कूल। अब मैं क्या करता हूं, आई एम जस्ट गोना राइट द केस स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। सो मंथ, डिपार्टमेंट आईडी एंड मेरे को क्या क्या चाहिए। सो मेरे को ओके, सो आई नीड द डिपार्टमेंट का मेरे को क्या चाहिए, इस टेबल से मेरे को मंथ चाहिए एंड द डिपार्टमेंट आईडी भी तो चाहिए। सो डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए। सो मेरे को क्या है फाइनली, इसके साथ डिपार्टमेंट आईडी तो सेम है। सो मैं यहाँ पे आउटपुट में मेरे को मंथ चाहिए सबसे पहले। सो मंथ, मंथ कहाँ से आएगा? month I can take it from my first table. So a dot pay month, I'll take it from here. डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आएगा? डिपार्टमेंट आईडी तो यूनिक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी इज फाइन, आई कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ फॉर द थर्ड कॉलम विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज एक्चुअली कंपैरिजन, राइट? इस कंपैरिजन के लिए मेरे को यहाँ पे केस स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। सो मैं वही कर रहा हूँ। सो केस यहाँ पे कंपैरिजन के लिए है मेरे पास व्हेन में क्या बोलूंगा? अब व्हेन सिंपल है ना। अब जब मेरे पास मैं बोलूंगा कि डिपार्टमेंट का जो एवरेज है इट इज ग्रेटर देन कंपनी एवरेज देन हायर, सिंपल हो गया। सो मेरे पास क्या है? डिपार्टमेंट एवरेज, केस व्हेन डिपार्टमेंट एवरेज इज ग्रेटर देन कंपनी एवरेज, देन ये हो गया हायर। एच कैपिटल वैपिटल है क्या? हायर एच स्मॉल ही है, ठीक है, हायर, ठीक है। ये हो गया पहला। एंड देन ये तो मेरा पहला केस हो गया हायर का, मैंने बस लोअर का भी लिख देता हूँ। देन सॉरी, व्हेन, सेम चीज कॉपी करता हूँ नीचे, एंड देन आई हैव, इसके जगह पे ये हो गया स्मॉल, तो हायर की जगह पे हो जाएगा लोअर। कूल। एंड ये हो गया मेरे पास व्हेन का दो केस, और इसमें एल्स हो जाएगा। एल्स अगर दोनों कुछ भी नहीं है तो एल्स सेम, एंड देन हियर केस को मैं एंड कर दूंगा। कूल है। अब इसको, इस पूरे कॉलम का एक नाम भी देना पड़ेगा मुझे, है ना। सो इसमें कॉलम का नाम है मेरे पास कंपैरिजन, सो इट्स गोना बी कंपैरिजन लाइक दिस। सो एंड एज कंपैरिजन। कूल। डिपार्टमेंट आईडी में सूरज आई डोंट थिंक जरूरत है, बिकॉज उसमें डिपार्टमेंट तो यूनिक है ना। वैसे भी इसमें डिपार्टमेंट मेरे पास इस टेबल में तो वैसे भी नहीं है, और इस पूरे टेबल में देखोगे तो 4 ही कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट एवरेज, पे मंथ और कंपनी एवरेज। सो और पे मंथ क्योंकि दोनों में है इसलिए मैंने यहाँ से रेफर किया है इसको, ठीक है। आई डोंट थिंक डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, बट स्टिल एक बार रन कर लेते हैं जस्ट टू बी डबल श्योर। मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ये ऑन पे मंथ, ये तो मेरे को नहीं चाहिए, हाँ तो ये थिंक ये सब नहीं चाहिए मेरे को। सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेबल जो हो गया आपका, टेबल ए इज जॉइनिंग विद दिस टेबल बी ऑन ए डॉट पे मंथ इज इक्वल टू बी डॉट पे मंथ, है ना। एंड इस पूरे टेबल में से ओके, सो फ्रॉम तो लिखना भूल गया, फ्रॉम। सो ये फ्रॉम दिस इंटायर टेबल है ना, फ्रॉम दिस इंटायर टेबल सेलेक्ट मैंने क्या करा है, मंथ करा है, डिपार्टमेंट आईडी करा है, एंड देन कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे फ्रॉम दिस एंटायर टेबल। लुक्स गुड टू मी यार, लुक्स प्रीटी गुड टू मी, लुक्स प्रीटी गुड टू मी। एक बार मैं इसको चलाता हूँ। लॉजिकली मेकिंग सेंस गाइस? Cool, great, absolutely great. So we have done this, right? Pretty clear? Guys, just take a while to really grasp this code. I mean, if you are able to understand the logic, again, focus on the logic, guys. I hope this logic is pretty much clear to everyone what I did. Just a quick thumbs up if you are able to understand the question, guys. Cool, great. Thank you, Suraj. Anybody else? People are able to understand the question? Meanwhile, let's try to submit this. If there is any edge condition or something. Okay, cool, great. Perfect. So this got submitted as well. Very good.
Cool. It was a good question. I think we did a lot of things in this, but it was a good question, right? Okay, I think we have another hard question. Let's do this as well, right? So we have two hard questions today. Cool. Again, stick to the topic, guys. Let's try to first decode the question, understand the logic, and then try to code. You know, we'll do the same process here as well. So we have inputs, we have outputs, we have constraints, and then we have flow. Cool. So I have the table student. So I have the table student. I have the name and the continent here. So I have the name and the continent here. So there is no primary key for this table. Why? It may contain duplicate. Okay, fair enough. So there is no primary key for this table. It may contain duplicate rows. So name and continent. Yeah. So I mean, same name can be from multiple continents, right? So that is purely true. And each row of this table indicates the name of a student and the continent they came from. है ना? Fair enough. ठीक है. Cool. Cool. So, okay, only one table we have now. Okay. Chalo. A school has students from Asia, Europe, and America. So a school has students from Asia, Europe, and America. Cool. Write a SQL query to pivot the continent column in the student table. A SQL query to pivot the continent column in the student table so that each name is sorted alphabetically and displayed underneath its corresponding continent. Example देखते हैं. So the output header should be America, Asia and Europe respectively. Okay, so that's समझा नहीं यार. Example देखते हैं. समझ में नहीं आया मुझे. Okay, student table क्या है मेरे पास? Name and continent है. ठीक है. Jane is from America. Pascal is from Europe. Z is from Asia. Jack is from America. Okay. So I have these three written in the output. So America, Asia, and Europe becomes my. Okay, so हमने pivot कर दिया basically इसको ना. ठीक है. So मेरा ये अमेरिका, एशिया एंड यूरोप जो है, अमेरिका, एशिया एंड यूरोप. So अमेरिका, एशिया एंड यूरोप मेरा तीन हेडर बन गया बेसिकली. एंड जो भी मेरे पास नाम है इसमें, आई एम जस्ट अपेंडिंग इट अल्फाबेटिकली. ये बोला था ना. ओके, सो दैट ईच नेम इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली. ओके. ये नल भी है यहाँ पे. देखो, अगर यहाँ पे काउंट ज़्यादा है तो मिसिंग में नल भी आना चाहिए. ओके, गुड क्वेश्चन यार. दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूँ. तो मेरे पास इनपुट में मेरे पास क्या है यार? ठीक है, इनपुट में मेरे पास नेम कॉन्टिनेंट है और तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें इनपुट में, है ना. आउटपुट में ही देखते हैं. सो आउटपुट में मुझे क्या करना है? बेसिकली 3 कॉलम्स बनानी है. तो 3 कॉलम्स मेरे पास होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? अमेरिका, एशिया एंड यूरोप. सो अमेरिका, एशिया एंड यूरोप. ठीक है. एंड इसके नीचे में पिवट ऑफ नेम्स, है ना. कॉन्स्टेंट्स में क्या है? नेम्स sorted alphabetically for each continent, है ना. And also look for null values if count less than max count, something like that. Suppose मेरे पास अमेरिका में 2 है ना, तो 2 रो बनेंगे. जितने मैक्स होंगे उतने नंबर ऑफ रोज होंगे यहाँ पे, और जहां जहां पे वो फिल नहीं करेगा वहां पे नल होना चाहिए. ये भी एक मुझे हाँ यार, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर लिमिटेड टू 3. मैं तो यही समझ पा रहा हूँ बिकॉज they have said it's like this: America, Asia and Europe. We'll try to code it. We'll try to see. I mean, there should be, because they have specifically mentioned na, so America, Asia and Europe. So I'm also assuming it's a good question actually. I'm assuming it's only 3 continents. I don't know why, but because they have specifically mentioned America, Asia, and Europe. You know,
it should be if there would be multiple, right? So okay, so so test cases are generated so that the student number from America is not less than either Asia or Europe. ओके, सो अमेरिका का हमेशा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना, अमेरिका। सो स्टूडेंट नंबर फ्रॉम अमेरिका is not less than either Asia or Europe. So basically सिमिलर होगा या ज़्यादा होगा, है ना। एग्जाम्पल में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। विल सी, चलो विल सी क्या कर सकते हैं इसमें। कूल है, चलो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन पे ट्रिकी है, डेफिनेटली ट्रिकी है, नो डाउट अबाउट दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। बट कैसे कर सकते हैं? Okay, so we have a comment from Suraj. He says, for sorting per continent, we can just sort all in the first query and then use it for case when. Hmm, कर सकते हैं, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल। हाँ, अगर पहले एक साथ में सारा कोई सॉर्ट कर दें एंड जस्ट कीप ऑन एडिंग इट, हाँ वो भी लॉजिक सही लग रहा है आपका मुझे। बट स्टिल मैं तो सोच रहा हूँ, ऐड कैसे करोगे ना, पहले वो सोचना पड़ेगा। सॉर्टिंग तो चलो बाद में आता है ना, पहले एक बार सोचते हैं पहले हम ऐड कैसे करेंगे। लॉजिक लॉजिक पहले, अगेन लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ द लॉजिक हियर, है ना। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसको हम पिवट करेंगे कैसे। हम्म इसमें क्या करें यार, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे दिमाग में। मैं सिंपल, मुझे लग रहा है कि मैं अगर अ, हम्म, क्या करूं यार। अगर मैं दो दो तीन चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं सिंपल, अगर रो नंबर से भी यूज़, अगर रो नंबर और ओवर का यूज़ कर लूँ। हम्म so अगर मैं ओवर, मतलब अगर मैं पार्टीशन करके इसको बनाऊं, है ना, रो नंबर ऑफ ओवर निकालूं, अ, कर सकता हूँ यार, वैसे भी तो कर ही सकता हूँ ना। अ, अगर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। गाइस क्विकली क्विकली कुछ कुछ बताओ क्या कर सकता हूँ। वी हैव फ्यू मोर कमेंट्स। सो we have case when if matches continent then select student name or for call else null. केसिंग के थ्रू मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, मतलब ऑनेस्टली थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, मतलब मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है केसिंग जो करना। मैं इसको एक्चुअली मैं आई एम थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग इट फ्रॉम मोर ऑफ पार्टीशन करके निकालने का, है ना। मेरा स्टिल ऑब्जेक्टिव तो वही है, बट अगेन एक बार वापस से देखते हैं इसको किस। आई एम स्टिल थिंक गाइस, आई मीन बिकॉज अब केसिंग से करोगे ना, केसिंग से आई एम स्टिल स्केप्टिकल, मतलब मुझे इसमें थोड़े कंसर्न्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माय एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर मैं सिंपल, अगर मैं रो का फंक्शन यूज कर लूँ यार, रो रो नंबर, है ना। अगर देखो पिवट नंबर, पिवट का निकालने का एक्चुअली एक बहुत सिंपल भी अप्रोच है। हम ना डायरेक्टली रो नंबर एक फंक्शन होता है आपके पास अवेलेबल, आपको आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेलेबल ऑफ दिस। पार्टीशन टॉपिक एक्चुअली मैंने कवर नहीं करा है अमन, दैट्स आई थिंक आई हैव नॉट डन दैट, सो आई थिंक दैट आई थिंक आई शुड टेक दैट। So what I'll do is in the next class now, next weekend I'll prepare a content for पार्टीशन स्पेसिफिकली, लाइक रो नंबर हो गया, ओवर हो गया, है ना। ये सब चीज़ें हमने पहले वाले क्लास में भी करी थी, बट आई हैव नॉट कवर्ड दिस टॉपिक इन द स्लाइड। वेरी वेल पॉइंटेड अमन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई हैव नॉट कवर्ड दिस टॉपिक इन माय कंटेंट। ठीक है, सो आई विल डू दैट। सो इनफैक्ट ना इसका एक देखो सिंपल अप्रोच क्या है, मैं जो सोच पा रहा हूँ, लाइक इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली, अगर मैं सिंपल करना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तीन डिफरेंट टेबल्स बनाता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगेन मैं लॉजिक बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सो आई एम गोना क्रिएट, अगेन आई एम गोना क्रिएट थ्री क्रिएट थ्री टेबल्स, ठीक है। फर्स्ट में क्या करूँगा, मैं फर्स्ट में
एक सिंपल वही बनाना चाहता हूँ कि क्रिएट मतलब इस टेबल का कॉलम का नाम होगा अमेरिका, ओके, एंड इसमें हो जाएगा नेम्स, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेरिका। क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। अभी करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैं क्या करूंगा, इसको जो मेरे पास इंटायर डेटा है ना उसको मैं रो नंबर पे कर दूंगा। रो नंबर हमारे पास एक अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल एक फंक्शन है जो जिसपे हम पार्टीशन रो नंबर ओवर, सो बेसिकली रो नंबर एक फंक्शन है एंड देन ओवर कर दूंगा इसको अगर, सो विल गेट अ पार्टीशन ऑफ माय डेटा एंड ओनली गेट द रोज जहां पे मेरे पास एंड देन इसमें ऑब्वियसली एक मैं कंडीशन डालूंगा वेयर say where this continent is gonna be my America, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा ना तो सिंपल मेरे को वही मतलब क्या कहते हैं अमेरिका का कॉलम मिल जाएगा, बट इसके अंदर में सारे नेम्स होंगे और वो ऑलरेडी पार्टीशन होकर के आएगा, उसी इंडेक्स को वो ढूंढेगा, उसी रो नंबर को ढूंढेगा जहां पे ये अमेरिका अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है, और उसको यहाँ पे ऐड करता चला जाएगा। समझ गए? तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, अमेरिका का निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब लाइकवाइज मैं इसको सिमिलरली एक्सटेंड कर दूं तीनों के लिए, तो मैं ये तीनों के लिए एक्सटेंड कर दूं, ये अमेरिका के लिए हो गया, ये ऑब्वियसली ये एशिया के लिए हो गया, एंड सेम चीज़ यहाँ पे एशिया के लिए हो जाएगा ये, एंड ये सेम चीज़ मैं कर दूं यूरोप के लिए, है ना। सो ये हो गया यूरोप के लिए। तो मेरे पास अभी क्या है, देखो अब इन दिस टेबल आई हैव वन कॉलम, सो इसका आउटपुट क्या है, इन दिस कॉलम आई हैव अ कॉलम नेम अमेरिका एंड उसके अंडर में सारे नेम 1 नेम 2 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। लाइकवाइज सेम चीज यहाँ पे क्या है, आई हैव यहाँ पे आई हैव एशिया जिसके अंदर में नेम वेम करके आ रहा है, ठीक है, एंड देन इसमें क्या है मेरे पास सेम चीज है यहाँ पे, बट यहाँ पे यूरोप है, और यूरोप जहाँ पे नेम 1 नेम 2 बोल रहे हैं वो यूरोप के नेम 1 है, एशिया में एशिया के नेम 1 नेम 2, ये इसका आउटपुट है इस टेबल का, ठीक है। सो आई हैव 3 टेबल्स नाउ। अब द प्रॉब्लम इज कि मुझे नल करना है, राइट। अब मुझे नल नल एक इसमें इशू मुझे यही दिख रही है कि आई हैव टू फाइंड आउट कि नल नल कैसे कर सकते हैं, है ना। अब नल अगर मुझे करना होगा इसमें नल के केस में तो सिंपल है ना, बिकॉज एक और देखो इसमें अच्छा इन्होंने कंडीशन क्या दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट कि अमेरिका जो है the student of the student number from America cannot be less than cannot be less than either Asia or Europe. So America का जो count है वो एक major count है, मतलब अगर इसको मैं as a reference लूँ, if I take America as a reference, so we can keep on joining the Asia and the Europe tables, right? Because ये इससे less नहीं हो सकता. So if I do a left join on this, for example, if I just do a left join, so इसमें क्या होगा, जहां जहां पे अमेरिका के साथ वो मैच करेगा कॉलम्स को। अब इसमें अगेन अब हमारे पास ऑन का कंडीशन क्या है, इसमें हम रो इंडेक्सेस को कॉपी कर सकते हैं ना। सो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इंडेक्स होगा बेसिकली इंडेक्स नंबर, इसको मैं इंडेक्स 1 के नाम से सेव कर लूंगा और इसको मैं इंडेक्स 2 के नाम से सेव कर लूंगा। तो जब मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन इस पे करूंगा तो मेरा कंडीशन क्या होगा, ऑन माई इंडेक्स 1 शुड बी इक्वल टू इंडेक्स 2। समझ में आया, मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन कर सकता हूं, एंड देन सिमिलरली इस पूरे टेबल को मैं अगेन क्या करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन कर दूंगा इस पे, ठीक है, इन दिस एंटायर टेबल। समझ में आ रहा है, लॉजिकल कनेक्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको भी लेफ्ट ज्वाइन करता हूं इन दिस केस, ओके, सो अगेन मेरे पास इंडेक्स जो मेरे ओके, सो अगेन मैं सेम चीज, अब देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पर है ना कि मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन जिससे कर रहा हूँ, अगेन इसको भी लेफ्ट ज्वाइन में करूंगा अमेरिका वाले के साथ ही एक्चुअली। सो इसको मुझे ऑन करना बिकॉज यही मेरा मेन है, इसको मैं इंडेक्स 3 कर दूंगा एज इंडेक्स 3। So here again I'll be saying index 1 should be equal to my index 3. Cool. So अभी जब मैं इन 3 टेबल्स का जब मैं फाइनली मिक्सचर देखूंगा, तो ये अब ये फाइनली एक फाइनल टेबल है मेरे पास, है ना। तो मेरे पास ये 3 जो टेबल हो गया,
ये अल्टीमेटली मेरे पास एक मर्ज टेबल है, फुल फाइनल मर्ज टेबल है. I mean, sorry, this entire thing is my full final merge table. And इसमें से मैं क्या कर लूंगा, select star कर लूंगा. select star नहीं कर सकता, sorry, मुझे अमेरिका निकालना पड़ेगा. अमेरिका and then I have to call Asia and then I have to call Europe. समझ में आया लॉजिक? आई थिंक टोटली पॉसिबल है. लॉजिक समझ में आया सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? है ना, पॉसिबल है ये. लेकिन काम करते हैं, सिमिलर चीज अप्लाई करने का ट्राई करते हैं. आई थिंक केस से भी सूरज सिंह, केस 3 केस 1 विल बी यूज्ड एज वन केस विच रिक्वायर्ड पर कॉन्टिनेंट नेम एज पर द अबव लॉजिक. हाँ, केसिंग से देखो, केसिंग क्या है ना यार, केसिंग से मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे करूँ इसको. ये केसिंग से मुझे ट्रिकी लग रहा है. रीजन बीइंग, मुझे ना कोई रिप्लेस नहीं करना. आप देखो केसिंग का लॉजिक समझो. आई थिंक यहाँ पे केसिंग मुझे क्यों वैलिड नहीं लग रहा है, रीजन बीइंग कि केसिंग का लॉजिक क्या, अगेन केसिंग इज अप्लाइड व्हेन देयर इज सम कंडीशन एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू वांट टू टेक एन एक्शन, राइट. आप जिसे बोल रहे हो, अपने कंडीशन जैसे बोला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन अमेरिका है, तो हमने वहां से उसको पिक करना है. यू हैव टू सेलेक्ट दैट. वी आर नॉट सपोज टू चेंज समथिंग, वी आर नॉट सपोज टू ऐड समथिंग, राइट. अगेन अगर इसको आप लूप के अंदर डालोगे तो मे बी वी कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग समथिंग ऑन केस. थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा केस के थ्रू इसमें. मतलब आप कोड को ना थोड़ा मुझे से लग रहा है कॉम्प्लिकेट कर लेंगे इसको, इस कोड को केस के थ्रू, बिकॉज वो मल्टीपल लूप में चला जाएगा वो. सो केस बहुत आइडियल लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे सूरज, टू बी ऑनेस्ट. बट स्टिल अगेन क्योंकि आपने केस बोला है, सो वी माइट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट द लॉजिक आल्सो ऑन केस पे कैसे कर सकते हैं इसको. मे बी अगर आप ज्यादा समझ पा रहे हो तो मुझे प्लीज बताओ, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ लॉजिक यू आर थिंकिंग, बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा एप्ट नहीं लग रहा है केस यहाँ पे. बट स्टिल विल ट्राई टू सी दैट इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी फॉर श्योर. बट फॉर नाउ हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ आपको, रो नंबर और ओवर जब करूंगा ना तो बेसिकली मेरे को इंडेक्सेस आ जाते हैं जहाँ पे वो बोलो सिंपल हो जाता है. इसे सिंपल फंडा ना ये पार्टीशन वाला. मैं पार्टीशन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है गाइस, तो आई विल डेफिनेटली टेक दिस नेक्स्ट वीकेंड. आई विल ट्राई टू ऐड दिस. चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू okay, let's try to solve this with this logic. Okay, okay, this one is saying condition will be continent name and we can select student name if matches, else null. um okay, we can do that. We can in fact do that, uh, but still I'm little skeptical of its application. देखो मैं सच बताऊँ, मैं इतना मतलब क्यों सोच रहा हूँ. I'm still thinking of कि मैं इसको किस तरीके से ऐड करूंगा. अगेन ऐड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिर हम वो कर सकते हैं. देखो मैं आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था काउंटर डिफाइन करने का, याद है आपको? याद है मैं एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल स्टैटिक वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में पहले बताया था आपको, एट द रेट करके डिप्लॉय करते हैं ना, वो एक वेरिएबल को मैं सेट कर सकता हूँ एट द रेट करके, एंड देन वी कैन ऐड अ काउंटर. सो जैसे हम पाइथन में करते हैं +1 करके, है ना. सो उस टाइप का कुछ कर सकता हूँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है. सो काउंटर पे अगर मैं ऐड करता चला जाऊँ जहाँ पर भी मेरे को नेम में मिल रहा है टाइप्स, तो हर एक का काउंटर लाइक अ फॉर लूप बेसिकली, है ना. सो फॉर लूप के थ्रू हम कर सकते हैं, लूप में डाल करके काउंटर को मैं ऐड करता चला जाऊँ, लाइक लूप में ऐड करता चला जाएगा. दैट इज वन थिंग विच आई कैन थिंक ऑफ, टू बी ऑनेस्ट. बट वो ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज़ हो जाएगी क्वेश्चन पे. चलो ठीक है, सिंपल ये इंडेक्स रो नंबर तो सिंपल है ना यार. सो ओके ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है. कूल यार, कूल. ठीक है चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं इससे, है ना. आई थिंक मेरे को भी ज़्यादा सिंपल लग रहा है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. चलो अभी हमें 1 by 1 बनाना है ना, ये हर एक अमेरिका का बनाते हैं. चलो सो आई हैव इट हियर. सो अभी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए फ्रॉम माय इंटायर टेबल विच इज माय स्टूडेंट, एंड दिस स्टूडेंट टेबल से मेरे को चाहिए अमेरिका का इन्फॉर्मेशन, राइट. सो जहाँ पे मेरे पास कॉन्टिनेंट का नाम है अमेरिका, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नेम चाहिए और वो इंडेक्सेस चाहिए. सो मेरे को क्या चाहिए, सेलेक्ट नेम. नेम को ही मैं अमेरिका कर दूंगा. नेम एज अमेरिका हियर, अमेरिका.
and then in this case I want my row number underscore number over इसको मैं नीचे कर देता हूँ, रो नंबर ओवर एज इंडेक्स 1, राइट, फ्रॉम, क्या है ये मेरा टेबल का नाम, फ्रॉम स्टूडेंट, सो फ्रॉम स्टूडेंट, select name as America, row number over as index 1 from student, where क्या यार, continent था ना, हाँ continent, so where continent is equal to America. Cool, simple है. So मैंने क्या किया, नेम ले लिया अमेरिका को, रो नंबर कर दिया, ओवर कर दिया, उसको मैंने इंडेक्स 1 दे दिया, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू अमेरिका. एंड डेफिनेटली मेरे को एक और चीज़ रखना है, मेरे को इसको शॉर्ट वर्ड भी तो करना था ना, सो शॉर्ट भी करना है, तो इसी को यहीं पर ही मैं शॉर्ट कर देता हूँ. सो ऑर्डर बाय अमेरिका. ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट टेबल. कूल. Likewise, I can have it all of my two other tables. So my name America. In this case, I'll be saying Asia. Row number over as index 2. Student contact ka order by Asia, and here it will be Asia. Likewise, I'll be having name as Europe, and I'll be having index as 3. And then from student content is Europe. It's gonna be Europe, and it's gonna be order by Europe. ठीक है. ये मेरे पास 3 डिफरेंट टेबल्स हो गए, है ना. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी टेबल है, ये मेरा मेजर टेबल है, ये यहाँ पे मुझे पता है आई कैन टेक दिस एज अ रेफरेंस. सो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूँगा तो नल का भी सॉर्ट हो जाएगा एक्चुअली, जो मैं इसलिए बोल रहा था. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट ज्वाइन कर दूंगा दिस टेबल को दिस टेबल से ऑन माई. ओके, सो दिस इज अगेन आई हैव टू डिफाइन माई टेबल का नाम हियर, राइट. सो टेबल ज्वाइनिंग करने के लिए टेबल का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिव यू एन एरर एक्चुअली. सो आई हैव टू अगेन रीनेम दिस टेबल. सो दिस नेम दिस एज T1 and name this as no not here. So थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा सिंपल दिखे. सो ये हो गया T2. ओके, ये मैं and then I'm gonna name this as E3. ओके, सो ऑन पहला ऑन कंडीशन क्या है यहाँ पे, ऑन क्या है मेरे पास यहाँ पे, इंडेक्स 1 इज इक्वल टू इंडेक्स 2. ठीक है, सो इंडेक्स 1 is I'm saying index 1 should be equal to index 2 here, right. So this is fine, pretty much good. So again, all of this entire thing, again this join is done, so I have my on condition. So this again I'll be left joining in this with this table, and again I'll be having my on condition on, again same thing, index 1 should be here equal to this time index 3. ठीक है, cool. So at the end I'm just joining this T1 with both of these table as left joins. ठीक है, लॉजिक सेम है, सिंपल है. सो अभी इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ये पूरे को, अब क्या होगा, ये पूरा एक फुल एक नया टेबल बन गया, राइट. सो इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या क्या कॉलम है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, अमेरिका है, मेरे पास यहाँ पे एशिया है, मेरे पास यहाँ पे यूरोप है ना. और इसके बाद मेरे पास 3 और कॉलम्स हैं. मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है. आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस मेरे पास है ना. अब इन टेबल में से मैं सिर्फ इन सबको सिलेक्ट कर सकता हूं, तो मेरे को यही चाहिए ना. तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट दीज अमेरिका एशिया यूरोप फ्रॉम दिस एंटायर टेबल. कैन आई डू दैट? आई कैन ऑब्वियसली डू दैट, राइट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं इस पूरे टेबल में से ही, मैं इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो मैंने ऊपर में ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था. तो इस पूरे टेबल में से आई बी सिलेक्टिंग एशिया अमेरिका, अमेरिका एशिया एंड यूरोप. हाँ, इसी ऑर्डर में चाहिए, अमेरिका एशिया एंड यूरोप, है ना. कूल है. दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच फाइन. मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ. लेट मी जस्ट चेक दिस इफ दिस लॉजिक इज एक्चुअली गुड. हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. सो नल का भी फंडा ठीक हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन वेब ज्वाइन से.
Okay. Suraj has another comment to select case when content is called America, then name else null, end as America. Same for this from the sorted columns. From the sorted student. लॉजिकली तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है मुझे. सेलेक्ट केस व्हेन कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू अमेरिका देन नेम एल्स नल. बट अगेन आप देखो अगर आप सॉर्टेड स्टूडेंट ओके चलो एक बार आपका भी ट्राई करते हैं बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल. मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो. मैं बिल्कुल आपका लॉजिक समझ रहा हूँ. लेट मी ट्राई दिस आपका अप्रोच भी. ठीक है आप बेसिकली कह रहे हो. तो पहले मैं सॉर्टेड कर देता हूँ ना. सेलेक्ट आई हैव द टेबल हियर. क्या है मेरे पास नेम और कॉन्टिनेंट है राइट. तो सेलेक्ट नेम कॉन्टिनेंट सही लिख रहा हूँ ना. कॉन्टिनेंट फ्रॉम फ्रॉम क्या टेबल का नाम है स्टूडेंट. फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम. ठीक है ये कर दिया. ये टेबल हो गया हमारे पास. ये इस टेबल का नाम हो गया ए. ठीक है अब आप क्या बोल रहे हो. सेलेक्ट केस कर लो. सेलेक्ट पहला केस लिखता हूं. केस व्हेन माय कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू अमेरिका. अमेरिका then name else null. Cool. And then I'll have another case here like this, and I have another case here like this. In this case we'll be having Asia, then name else null. ये actually आपको बताता हूँ क्या इशू है यहाँ पे ना. आपका प्रॉब्लम क्या होगा. मल्टीपल रोज क्रिएट हो जाएंगे. आपको मैं भी इसका दिखाता हूँ इसको आउटपुट. आई एम स्टिल स्केप्टिकल कि आपको एरर रिजल्ट देगा. सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग राइट. फ्रॉम obviously this is what you're saying. Correct me if I'm wrong, Suraj. Let's try to run this in fact. Okay so it is giving me an error. So from extra see the problem. Okay I can rename this as America and as Asia and as Europe. Let me run this. Okay let's see. Okay okay now I'll see. I'll tell you what the problem here is. Okay the problem is you can see the multiple values jack null null because there are 3 rows and you're saying for each of the rows you're giving null. So it is just simply taking the data where the name is present. So where the name is present it is giving there. It is putting into your column but putting null for all the others. You're getting it. It is not giving you exact where it has to be given. So suppose the output is what. So I have so when one row will be given you one simple column. So because it can be either of these right. You're getting it. या तो वो अमेरिका में हो सकता है या तो एशिया में हो सकता है या तो यूरोप में हो सकता है. सो वन रो में सिर्फ एक ही वैल्यू होगा बाकी तो नल हो जाएंगे. दिख गया आपको. एंड सेकंड रो में जेन होगा बाकी तो नल हो जाएगा. ये नहीं चाहिए हमें. ये आउटपुट नहीं चाहिए. मैं आपको यही समझा रहा था कि ये केस से डायरेक्टली इट्स नॉट दैट सिंपल क्वेश्चन. ये केस से सॉल्व नहीं होगा. इसका पता है इसका सॉल्यूशन क्या है. मैं आपको कि आपने अच्छा अप्रोच बताया. आई टेल यू कि इसमें सॉल्यूशन क्या है इसका. हमने क्या करना पड़ेगा पता है. इस केस में हमें यहाँ पे एक एट द रेट सेट करना पड़ेगा. मेरे को सेट एक वेरिएबल करना पड़ेगा. सपोज ए एंड सेट यहाँ पे एक वेरिएबल करना पड़ेगा अगेन बी एंड सेट करना पड़ेगा एक वेरिएबल यहाँ पे सी. एंड इसको हम स्टार्ट कर देंगे जीरो से. सपोज इसको हम जीरो से अगर सिंपल एक जीरो से भी स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल किसी जीरो से भी स्टार्ट कर देते हैं अगर. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ इसको फॉर अगर मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करता हूँ जीरो से. ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ फॉर ईच ऑफ द लूप इट शुड बी एट द रेट a colon 1. मतलब it's more like I'll be in the loop I'll be adding one plus one counter on top of this. You're getting it.
सो अभी यहाँ पे ना एक सेट वेरिएबल करके, एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करके इसको लूप में रन करना पड़ेगा, ताकि ये उस हर एक लूप में ये केस रन होगा। आप समझो, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था स्टार्टिंग में कि ये सिंपल केस स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज इससे आपको एरर दिख गया होगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना। ये सिंपल केस से सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। Cool, but ठीक है, that's good that you told me, and in fact we tried and you understood also what logic flaw is there in the case statement directly, है ना। So इस केस में थोड़ा इंडेक्सिंग करके ना इसमें बेटर अप्रोच है। सो दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, राइट। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि हम सिंपल तरीके से इसको समझ जाए। तो ठीक है, दिस इज फाइन, इसको सबमिट कर देते हैं क्विकली, लेट्स सी। Perfect. So we are pretty much done. That's good. Great. Cool. So I think this is pretty much done. Okay. I think only one is left, right? So let's take this one more question for the day, and let's then we can wrap up. So then it's because it doesn't look good. So rest three are solved, right? So let's solve this one, and then maybe we can stop for the day. Yeah. So let's quickly do this, and then we can finish this up. Okay. So we have our inputs, we have our outputs, we have our constraints, then we have flow. Cool. So I have my table here, my numbers, and then we have the things here as number is integer. So there is no primary key for this table. Oh, sure, it may contain duplicates. Fine. Each row of this table contains an integer, है ना? So duplicate भी हो सकता है. Single number is a number that appeared only once in the my numbers table. ठीक है. Write a SQL query to report the largest single number. If there is no single number, report null. Okay. So single number is what? Occur only once, right? This is going to be part of my input, है ना। एंड देन आउटपुट मुझे क्या चाहिए? अ सिंगल लार्जेस्ट सिंगल नंबर चाहिए, लार्जेस्ट सिंगल नंबर। इफ नो सिंगल देन नल। ठीक है, इतना ही करना है ना, मैं सिंपल है ये तो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड सिंगल ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। तो इसमें बस क्या है, 8 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 एंड 6। तो इसमें 1 4 5 6 दिस आर सिंगल नंबर्स, बट 6 सबसे बड़ा है, सो आई विल बी रिटर्निंग 6 हियर। कूल है। इसमें आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिंपल है। सिंपल हम क्या कर सकते हैं इसमें गाइस, नंबर को हम ग्रुप बाई कर देंगे नंबर से, है ना। एंड उसका हम क्या कर सकते हैं, पहले काम करते हैं, पहले हम ओके। सो व्हाट वी कैन डू इज इन दिस केस फ्लो क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। एक विल क्रिएट वन न्यू टेबल, जिसमें क्या करेंगे, विल हैव ओनली those numbers with one count, है ना। एंड देन इसमें से क्या करेंगे, इस पर टेबल में से हम सेलेक्ट मैक्स कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो क्या करेंगे हम इसमें, फटाफट करते हैं, चलो। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में क्या करना है मेरे को, अगर मेरे को नंबर चाहिए और उसका मेरे को काउंट भी 1 चाहिए, तो सेलेक्ट में क्या बोलूंगा, सेलेक्ट मैं बोलूंगा मेरे पास क्या है, नंबर, सेलेक्ट नंबर फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है यार, फ्रॉम क्या है, माई नंबर्स। सो फ्रॉम माई नंबर्स। ओके, सो नाउ अब मेरे को क्या करना है, ग्रुप बाय num having count of my num is equal to 1। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट है, सिंपल है ये तो। अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को वो सारे नंबर्स निकल करके आएंगे जिसका काउंट 1 है ना, सिंपल हो गया ये। अब इसको मैं काम करता हूँ टेबल T1, एंड इसमें से क्या करना चाहिए मेरे को, सेलेक्ट मैक्स ऑफ नम, सेलेक्ट मैक्स ऑफ नम चाहिए। इसका आउटपुट में इसका नाम क्या है,
num. Select max of num as num from this table. Cool. Select max of num from this table, which is T1. Cool है? Simple है? ये तो बहुत ही simple question था. Let's try to dump this up. Let's try to run this. Cool. Got it. किसी को कोई doubt here? Anybody has any doubt in any questions, whatever we've discussed so far? No, right? Cool. That's great. So I think with this we are pretty much good for the day, guys. I think we have done some really good questions, and we have saw a lot of questions also today. So we did two hard questions, in fact, right? So that's a good speed. So I think we should be good with the submissions. And if anybody has any last moment questions, just do let me know. We can take that, or else we can wind up for the day. It's anyway a pretty long session, so we have done almost 2 hours of coding on SQL. Right. So again, any last moment question, guys, do put up it, or else we are good to go. So what we're gonna do now here is tomorrow again we'll be meeting, but that's gonna be for Python. So we're gonna be meeting at the same time, 9 or 9:30 ish, right? So that objective is to meet at 9 p.m., but we'll see. It might get delayed to 9:30. So 9 or 9:30 tomorrow, same time for Python. So it's gonna be for another 1 week again. So we'll be doing Python lead code problems the way we are doing it. And respectively for SQL, I'll come back again over the next weekend. So weekends we have fixed it for SQL, right? So we're gonna meet again the next weekend for SQL, and we'll try to solve another questions. And in fact, I'll try to prepare a content for partition also, right? So guys, please bear with me for that. I'll try to prepare a content for partition, and we'll take over some partition logics and all that. So we'll do that. Cool. Great. 1 week time, how to prepare data science interviews. Okay, interesting. So focus on your mandatory skill sets. Yeah, stats, ML, Python, SQL. Python, SQL आप day one day 7 दिन में तो सीख नहीं सकते हो, practice ही कर सकते हो. So practice as much as you can on Python and SQL. And stats and ML में focus on the work. So suppose if you have done some projects, right? So focus on your projects. Try to read out the things जो आपने इस projects में करे हैं, and try to just cover up the any concepts which you have done in that. So just be very thorough with your projects. So that's where you can at least prepare your projects at least for the interviews. So you cannot cover everything in 1 week. That's impractical to expect. But at least cover the projects which you have mentioned in your resume for the interviews. That's going to help you. Cool. Great. So with that, guys, thank you. I'm going to give your evening back. Let's meet tomorrow again for Python, and the next weekend for SQL. Great, guys. Thank you so much. Have a good evening ahead. Good night. Bye-bye.